Good evening, all of you, to all the participants, and warm welcome you to all of you on behalf of NJ India. Right. ये आज एक हम नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। आज हमारा ये सैटरडे स्कूल शेड्यूल्ड है और आप सब जानते हो कि हम हर एक सैटरडे एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और उसमें कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ऐसे ही आज भी हम एक यूनिक टॉपिक और यूनिक स्पीकर के साथ जुड़े हैं। हमेशा सैटरडे को आप एक ऐसे स्पीकर को सुनते हो जो नॉर्मली उसकी कोर एक्सपर्टीज होती है और सालों का उनको एक्सपीरियंस होता है। आज भी ऐसे ही टॉपिक के साथ और ऐसे ही स्पीकर के साथ हम जुड़े हुए हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। आज हमारे साथ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी से उनके प्रेसिडेंट मिस्टर अविनाश है और उनके साथ हमारे दूसरे स्पीकर जो है वो है मिस्टर सिद्धार्थ, जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट और रिटेल एडवाइजरी सर्विस को हेड करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा। टॉपिक के बारे में और स्पीकर के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके लिए मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर सिद्धार्थ को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। और हम बाद में एज यूजुअल क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। उसमें मैं जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे 3-4 वो वी विल ट्राई टू कवर इट। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर, ओवर टू यू। Thank you, Ketan ji, and very good evening to all our investors who have joined. सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था, एनजे के लिए हमारे लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू एनजे, एंड एनजे के लिए बहुत बड़ी चीज है दैट एवरी सैटरडे दे कम एंड ट्राई टू ऐड वैल्यू. So the way I look at it is एनजे is always नया जोश, एंड इस जोश के साथ बड़े रहना, उम्मीदों के साथ चलते रहना is the big thing what we should drive. Now having said that, आज की टॉपिक जैसे केतन जी ने कहा हमारे लिए है सेविंग्स का बेहतर तरीका. नाउ सेविंग्स का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? सेविंग्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि वो एक बचत है, वो एक संचित धन है. एंड टिपिकली व्हेन यू लुक एट सेविंग्स यू मस्ट बी क्यूरियस दैट हम इसको निवेश क्यों नहीं डालें और हम इसको सेविंग्स क्यों डालें. सो फ्रॉम ए रिटेल investor perspective, from a affluent investor perspective also, we keep on getting confused between savings and investments. निवेश और बचत हालांकि हमारे पास वो औधा है जहां पे हम रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट में हम पैसे रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं. बट जैसे ही हम निवेश के बारे में बात करते हैं, निवेश हमारे लिए व्हेन यू गेट द मनी टू वर्क फॉर यू, जो पैसा जब आप पैसे को काम में लगाते हो उसको हम बोलते हैं निवेश. एंड उसके क्या जरिया है, वो हमको कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए. इक्विटी मार्केट्स आर अ वेरी बिग मार्केट, इट्स वेरी अनफैथमेबल, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास 2-3-4 ऑप्शंस हैं तो वो ऑप्शंस क्या है एंड हम उसको कैसे एक्सरसाइज करें इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज इन्वेस्टर्स. दूसरी पहलू मैं ये इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि निवेश की दुनिया में दो ही सेंटिमेंट होता है, कोई तीसरा सेंटिमेंट नहीं है. एंड विच आर दिस टू सेंटिमेंट्स? वन इज लालच, वन इज डर. देयर इज अ ग्रीड एंड देयर इज फियर. टेक्निकली देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, एंड कितना ग्रीड और कितना फियर के ऊपर एक निवेशक डिसीजंस लेते हैं वो परिमात्रा भी मेजर किया जाता है. इसका हमें पहलू मिलेगा आज की चर्चा से, आज की डिस्कशन से. Now let me introduce the speaker for the evening. We have our President of India Business, Mr. Avinash Satwalekar, joining us today. And you know, if I have to introduce Avi, then I have to just say that he has been with Franklin Templeton for the last 26 years. 26 साल से वो कंपनी के साथ है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो खुद एक पोर्टफोलियो मैनेजर रह चुके हैं. और पोर्टफोलियो मैनेजर जब निवेश के बारे में बात करता है, जब सेविंग्स के बारे में बात करता है, तो ऑब्वियसली ही वुड हैव सीन इट फ्रॉम द टेक्निकल साइड ऑफ इट. तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा माध्यम रहेगा कि समझने के लिए कि किस तरीके से हम लोग एक एक ऑप्शंस को टटोल पाए, जज कर पाए और एक्सरसाइज कर पाए. दूसरी चीज, Avinash Satwalekar, and he's renowned. I mean, we all know him. We call him by the name of Avi. Has joined the India business last year, but prior to that, वो अमेरिका में थे और अमेरिका में पोर्टफोलियो मैनेजर थे. 10-15 साल अमेरिका में रहने के बाद
वो हमारे वियतनाम बिजनेस को हेड करने के लिए एज ए सीईओ एंड सीआईओ मूव किए 2012 से 2017 तक, एंड 2017 से 2022 तक वो मलेशिया बिजनेस लीड कर रहे थे. So the reason I'm telling this is US, Vietnam, Malaysia, India. So he has got a fair perspective of the international markets, what he has done from a PM side, from a business side. So having said that, on academics, Avi has studied in Bombay initially, and then he did his MBA in finance from Wharton School at the University of Pennsylvania. He's also a chartered financial analyst, and he's a member of the CFA Institute and the CFA Society of San Francisco. So without further delay, Avi, welcome, and we have got the full set of investors of NJ wanting to hear from you today. Perfect. Thank you, Siddharth. Namaste, everybody. And let me first start by saying thank you for spending this valuable time in the evening with us. I do want to thank Ketan and the entire NJ team as well for having us here. ये जो topic है, savings का बेहतर तरीका. It is a very important topic. It is an important topic and it's very close to my heart. Because I feel that आप अगर सेविंग्स ही करोगे और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे तो रिटायरमेंट करने का जो होप है वो कम होता है. सेविंग्स करने से बस काम नहीं चलेगा, सेविंग्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ता है. सो आई थिंक द वे टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ डू यू लुक एट सेविंग्स एंड हाउ डू यू टेक एडवांटेज ऑफ सेविंग्स एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. एंड ये है जो आज एक घंटे में बोलेंगे कि बेहतर तरीका कैसे करना है. So let's start by let's just talk a little bit about how things have changed. जमाना बदल गया है, right? कैसे बदला है? Now a lot of these things you will have seen. टाइपराइटर से हम लैपटॉप पे आ गए, फ्लॉपी डिस्क से सीडी यूएसबी पे आ गए, और रोटरी फोन पे और स्मार्टफोन पे आ गए. How we cook has changed. How we travel, that has changed, right? I mean, a lot of you आप recognize करोगे वो मारुति 800 है जो पहली बार निकली थी. And अभी now you're looking at Tesla's coming into India at some point. हम शॉपिंग कैसे करते हैं वो भी चेंज हो गया है. हम खाते कैसे हैं वो भी चेंज हो गया. So a lot of things have changed, right? How we consume energy, that is also changing. So when you think about your retirement, वो भी बदल गया है, right? So पहले कैसे करते थे कि used to retire 60 साल के ऊपर. Your life expectancy was 75 maximum, right? So you had 10 to 15 years of retired life that you had to plan for. आप joint family में रहते थे. You were dependent on your children, right? Expenses were fairly standard, right? And your plans, आप जो retirement के जो plans रखते थे वो very standard. Pensions थे and traditional मतलब fixed deposit. अभी क्या हो रहा है? A lot of people are retiring earlier. Life expectancy बढ़ गई है, तो आपका जो retirement का जो वक्त है वो ज्यादा हो गया, right? So now on average आपको 30 साल के लिए retirement plan करनी है. Families have also changed. Joint families इतने नहीं है, nuclear है, right? Children are also doing their own independent thing, right? You now have to plan for your own retirement. Children will not take care of you. और expenses भी बदले हैं, right? Standard expenses जो थे खाने पीने का, now you're thinking of travel, you're thinking of hobbies in retirement. So you need to expend for that and you need to make sure you have funds for that. So now your traditional investments, yes, you still have your fixed deposit, लेकिन आपके पास अभी और एक जरिया है जो market linked avenues. Those are far more valuable. So the question is, क्या सच में जमाना बदल गया है? So how have investments changed, right? So when you think about that, that has not changed. कल भी we were doing properties, bank deposits and gold.
आज भी 80% is in these three buckets. Property, घर जो है अपना, बैंक डिपॉजिट और सोना. अगर आपका जो फाइनेंशियल वेल्थ है और अगर 80% इन तीनों में है, which we will see are not necessarily the best returning assets, then how are you going to build आपका जो रिटायरमेंट का जो नेस्ट होना चाहिए, how are you going to build that? So if you look at this, falling interest rates, right? You have interest rates that were 13%, अभी 6% पे आ गए, right? You have a large amount of bank deposits in the system. If your interest rates are going down, आपकी जो कमाई होती है जो बैंक डिपॉजिट में, वो भी नीचे आती है, right? You need to change that. You need to find an alternative to that. The biggest factor is why? Inflation. ये जो है, ये 30 साल का जो हमारा इन्फ्लेशन का एवरेज है, वो 6 या 7% के बीच में, राइट? सो अगर आप 6-7% से ज्यादा नहीं कमाते, तो यू आर नॉट इवन कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन. एंड व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? यू सी दैट आप जब मार्केट में जाते हो खरीदने, whatever you're buying today, next year is going to be little more expensive. And अगर आपकी जो इनकम नहीं बढ़ती है at the same level, then आपकी जो purchasing ताकत है वो कम हो जाती है. So you need to have investments that at least cover inflation. So what costs you 100 rupees today, tomorrow is going to cost you 107, right? 100 का 107 होने वाला है अगर अपने पास 7% का इन्फ्लेशन है. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, they also have to at least be 107, so you can afford your 107. आप देखो प्रॉपर्टी में, ये है रेंटल यील्ड्स across India. The highest you have here is, let's say, a 4% जो वडोदरा में, right? So 4% also is not covering inflation. Everybody likes property, और घर होना चाहिए, but those that are thinking of this as an investment, this is not providing you with that return. तो inflation को कैसे beat करें? What beats inflation? If you look across the asset classes, equities has consistently beaten. Gold आता है second. अगर आप government securities देखोगे तो 6%. So just about in line at the lower end of our average. But आप equities देखो तो 17% है, right? And this is over a 20-year period on an average. So every year you're getting 17%. So you are getting 10% on average more than your inflation level. So ऐसे आपकी जो investments होती है, that builds. We will talk a little bit about a compounding concept and why that is important for you. So if you look at your different categories, ये जो categories है financial assets or full assets, right? Equities का जो portion है on average is only 5% of your total wealth. इसको बढ़ाना चाहिए. Because if you look at all these different asset classes, equities is the one asset class जहां पे आप inflation को regularly beat करते हो, right? So as I was talking earlier, whatever asset class you look at the very least आपको inflation से ज्यादा होना चाहिए return. But equities are risky. सब लोग डरते हैं equities से. क्यों डरते हैं, right? Equities are risky. Why do you say equities are risky? Because equities में ऊपर नीचे होता है. So let's go back to that slide that I was talking about here. Inflation वाला जो slide I was showing you. Oops. So if you see, ये जो है, अगर ये यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर फ्लैट हो गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे गिरा पूरा, फिर कोविड के बाद, I mean, so this is COVID, right? ये है 2008 वाली crisis. When that happened, the market went down a lot. But you fast forward, आप आगे जाओ 10-12 साल, and it looks like such a small move, right? So people think
कि ये ऊपर नीचे makes it a risky asset. But आपका अगर investment horizon long term हो, जैसे होना चाहिए, आपको जब आप रिटायरमेंट के लिए जब प्लानिंग कर रहे हो तो 1-2 साल में रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं होती है. You need 20-25 years, you need 5-10-15-20 years. Over that period, equities, while they look volatile, the risky element of it is different, right? So let's talk about that. What do you think is the solution? Now, mutual funds, I would say, are the best solution, and they've been proven to be the best solution over the years, right? Partly because you can start with a simple investment plan, keep it regular, and you have consistent returns. It is the most transparent industry. So it is one of the best vehicles to build your investment landscape. So let's talk a little bit about the kind of the basics of investing. There are three major things. आप जब invest की बात करते हो, savings अलग होती है, लेकिन आप जब invest की बात कर रहे हो, there are three major things. कितने देर के लिए आप invest कर सकते हो, कब invest करना चाहिए, और कहाँ invest करना चाहिए. Those are the three main questions you always have. Now, we will answer those questions very quickly, but just to give you a sense, how long you invest, आप कितने देर के लिए invest कर सकते हो, the longer you can stay invested, the better will be your outcome. तो आप जितना देर रख सकते हो आपका investment consistently, आपकी भलाई उतनी ज्यादा होगी. When you invest, everybody, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट ऊपर है, नीचे है, अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. My answer to that is, आपको जब ही इन्वेस्ट करना है, कर लो. Timing is not important as much as आप कितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, right? Now, where to invest, we will talk about that a little bit. So, how long you want to stay longer? Because of compounding. So, यहाँ पे एक हमारा एग्जाम्पल है जो one of our flagship funds is Franklin India Flexi Cap. ये अभी 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. So let's take a simple thing. आपका अगर नॉर्मल SIP हो 10,000 हर महीने का, so आपका अगर after 20 years or after 30 years आपका कॉर्पस जो है ना इन्वेस्टेड, आपने पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 34 lakhs है, लेकिन आपका जो रिजल्ट at the end of 30 years is 10 crore, right? तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 34 lakhs है, लेकिन आपका जो रिजल्ट इन एंड 10 करोड़ है 30 साल के बाद. तो आपका जो XIRR है वो 19% है. नाउ आई विल गिव यू वन आइडिया. अगर आपने स्टेप अप SIP किया हो, आपको याद है हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, राइट? तो आपने अगर स्टेप अप हर साल आपने आपका जो SIP है बस 10% ज्यादा कर दिया, राइट? सो योर इन्वेस्टेड, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो 1.67 crores, लेट्स से राउंड इट अप 160 करोड़ हो जाए, 1 crore 60 lakh, सॉरी. लेकिन आपका जो रिजल्टेड, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ आफ्टर 30 years, 10 करोड़ के बगैर ऑलमोस्ट 17 करोड़ हो जाते, just by changing your SIP 10% every year. So just keep it in line, slightly above inflation. So there is a huge compounding effect, and what compounding I will explain. So let's take one more example. We have a Prima fund, which is another one of our long-term funds, right? And a lot of you probably already know it and invest. Normal SIP 10,000 per month, invested corpus 35 lakhs. आपका जो resultant है वो 13 करोड़ है, right? After 30 years. But if you step up, right? Same thing. आपने अगर 10% ज्यादा डाल दिया every year, right? You changed your SIP. Your invested corpus becomes 1 crore 80 lakh, right? लेकिन आपका जो corpus है 30 साल के बाद वो almost double हो गया है, right? So from 12 it's become 23, right? So that impact with just changing a little bit
आपका जो एंड रिजल्ट है रिटायरमेंट के टाइम पे becomes much more comfortable. Right? So you have to think of how you want to change. And the reason is very simple. When you started 10,000 a month was the right thing to do. लेकिन हर साल अगर inflation is rising 6 to 7%, आपने अपनी investment change नहीं की. You need to change that so that you actually are then being able to retire with a much larger corpus. So this is simply put a compounding effect. So I will explain this to you, right? 5 साल के बाद, so minimum when you think of retirement, you want to think at least 5 साल increments you want to think about, right? So if you invested after 5 years, आपका जो portfolio है, majority of that portfolio, any more than 50%, right? 56% is your gains, right? The remainder is what जो पैसे आपने डाले हैं अंदर portfolio में. बाकी का जो है, that the portfolio has done work. So when we say कि पैसे को काम करना चाहिए, this is an example of that. So आप अगर सोचो कि if you have invested, right, for the next 20 years, at the end आपका जो invested amount है बस 3% है. The money has done the work for you, and your entire portfolio now is driven by the gains in your portfolio. तो वो जो effect है उसको बोलते हैं compounding का effect. Now, when to invest? That is a question that we talked about earlier. कब करना चाहिए investment? Market ऊपर जा रही है, market नीचे जा रही है, कब करना चाहिए investment? So I always say कि you invest early. There is no wrong time to invest. But आपका जो plan होना चाहिए, it has to be long term and has to be very clear. कि हम आज अंदर जा रहे हैं, कल बाहर नहीं आना चाहिए. Right? And I'll show you why. But also when you think of retirement, if you don't start early, it becomes very difficult to catch up. So this thing we talk about, cost of delay. So let's talk about the earlier you start, the better off you are. So every 5 years you delay, right? So अगर हम 26 साल के हैं और 25 साल के हैं and we start planning for our retirement, you make an investment. Every delay you do, so let's say when we are 25 years old, we are more interested in buying new cars, buying new clothes, buying new watches. Retirement, जवान है, retirement के लिए बहुत देर है, कर लेंगे बात, right? But every 5 years जो आप delay करते हो, आपका जो monthly retirement होना चाहिए, वो जो amount है, double हो जाता है, right? So the main issue is you do not want to delay. So if you're 25 years old, let's take an example. अगर market का the average return in the market has been, let's say, 12% in the equity market. If you want, let's say, a 5 crore, आपको अगर retire में 5 crore चाहिए, you're going to retire at the age of 60. You need to, at the age of 25, start investing 7,700 रुपए every month. That will help you get there. अगर आपने 25 साल के उम्र में बोला कि नहीं हमको रिटायरमेंट के लिए बहुत देर है, I will wait. I will start when I'm 30. Now, when you're 30, आपकी जो retirement age वो change नहीं हुई है. So you only have 30 years now because you're going to retire at 60, right? So your average investment that you need on a monthly basis now has become 14,000. So it has doubled. So like that, आप हर 5 साल जो delay करोगे, तो आपका जो savings amount होना चाहिए और जो investment amount होनी चाहिए, that is doubling. So the main message is do not delay and do not discontinue. मतलब अंदर बाहर जो आप जाते हो investments में, that you should not do. And I'll tell you why. So the where to invest part, let's talk a little bit about. Asset allocation is very important, right? आपने ये सुना है, you've heard about this, but the reason for that is very simple. आप अगर जब खाना खाते हो, तो आप सिर्फ चावल नहीं खाते,
आप सिर्फ सब्जी नहीं खाते, सिर्फ रोटी नहीं खाते, सब खाते हो, और हर चीज जो आप खाते हो उसका फायदा अलग होता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में हर चीज में जो आप इन्वेस्ट करते हो उसका फायदा आपके पोर्टफोलियो के लिए अलग होता है, राइट? सो लेट्स टेक स्टॉक्स में अलग होता है, बॉन्ड्स में अलग होता है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में अलग होती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, हर कोई को आर्ट पसंद है, एंड देन कैश, वो इमरजेंसी के लिए जो होता है। बट आप जो डिवर्सिफाई करते हो उससे क्या फायदा होता है? एक तो आपको बेनिफिट्स मिलती है अलग अलग, तो स्टॉक्स की, एक्विटीज की जो बेनिफिट्स होती है वो अलग होती है, बॉन्ड्स की जो बेनिफिट्स होती है वो अलग होती है, ग्लोबल की जो डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स होती है वो अलग होती है। सो ऑल ऑफ दैट इट कम्स टुगेदर। तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स भी है आपके खाने के थाली की जैसी है। यू नीड टू थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड। नाउ व्हाई इज एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट, राइट? there's बहुत सारे स्टडीज किए हैं यूनिवर्सिटीज ने, लेक्चरर्स ने, एंड व्हाट दे हैव फाउंड कंसिस्टेंटली इज 90% ऑफ द रिटर्न्स जो मिलते हैं आर ड्रिवन बाय एसेट एलोकेशन। मतलब कहां पे पैसे डालना है, नॉट सो मच क्या खरीदना है। सो सिक्योरिटी सिलेक्शन जो है ना, जो 5% है, वो दैट इज टॉकिंग अबाउट या हम रिलायंस ले या बिरला ले या HDFC ले, दैट इज दैट डिसीजन। बट ये जो 90% का जो एसेट एलोकेशन है, दैट इज डिसाइडिंग कि भाई हम इक्विटीज में कितना डालें, बॉन्ड्स में कितना डालें। ना मार्केट टाइमिंग जो है ना, दैट इज द क्रिटिकल वन। एवरीबडी थिंक्स नो मार्केट जब ऊपर जा रही है तो सब लोग जाते हैं, बट यू वांट टू गेट इनटू द मार्केट व्हेन इट्स गोइंग डाउन, उसको बोलते हैं मार्केट टाइमिंग, राइट? बट इफ यू लुक ओवर लॉन्ग टर्म, मार्केट टाइमिंग की जो स्किल होती है वो बस आपको 2% कंट्रीब्यूशन देती है रिटर्न्स में। सो एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कहां जाना है, लार्ज कैप जाना है, US जाना है, चाइना जाना है, लार्ज द अदर इज इक्विटीज जाना है, बॉन्ड जाना है, हाइब्रिड जाना है, दोज डिसीजंस जो एसेट एलोकेशन के जो डिसीजंस है, दैट ड्राइव्स द मोस्ट ऑफ योर रिटर्न्स। सो लेट्स टॉक अबाउट एसेट एलोकेशन। इफ यू लुक पिछले 10 साल में 70% टाइम इक्विटी हैज बीन द नंबर वन, राइट? मतलब 30% ऑफ द टाइम्स इक्विटी वाज नॉट देयर, कोई और था, गोल्ड था। इफ यू सी इन वन सेक्शन हियर, मार्च 13 में CPI मतलब इन्फ्लेशन, मतलब नो इन्वेस्टमेंट बीट इन्फ्लेशन, बिकॉज 2013 में इन्फ्लेशन 10% थी और रिटर्न्स नहीं आए किसी एसेट क्लास में, बट दैट ओनली हैपेंड वंस। द रीजन टू शो दिस इज नो वन एसेट क्लास, कोई एक एसेट क्लास नहीं है जो हर साल हर वक्त आपको बेस्ट रिटर्न देने वाला है। ये रोटेशन होती है। The key is to stay invested, and equities 70% of the time have been at the top. So if you don't have equities, that is a problem. Similarly, ये देखो 10 साल में large cap versus small cap versus mid cap, आप देखोगे कि top performance जो है it changes. It's not, so you want to have a mix of large cap, mid cap, small cap. Geographic distance. If you look at it, in the last 10 years, US has been a big market that has driven, but China bhi hai, India bhi hai, right? So if you're thinking about diversifications, we have to think about all elements, right? You have to think about the product, you have to think about the size, matlab large, small, mid, and you have to think about geography, matlab kahan jana chahiye. We always talk about India because India's growth story is amazing. So India will always be a big part of the portfolio. But you have to also think that diversification honi chahiye, right? So I should have something in the US in terms of an investment, because that helps drive that diversification and gives you different returns. But so what's the challenge? This is all very logical, but it is not easy to execute.
right? So the challenge is हम volatility से डरते हैं, right? Especially in equities. अगर आप देखो, so when I started this chart goes back to 86. I started my career in the early 90s. Now, I'm sure there are some of you that will remember the Harshad Mehta time, right? So I was investing in Dalal Street during that time, right? So teji mein we made lots of money, right? But when that decline happened, ye dekho, ye 54% decline ho gayi thi during the Harshad Mehta's time. 54%, मतलब more than half your portfolio, right? आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो now it has just become 46, right? But if you got scared and you pulled out, you missed out on this entire move up, right? So you have to, it's not that there is no volatility, and it's not like ये बड़े declines हैं, छोटे नहीं हैं. I mean, ये आप देखो कोविड के डिक्लाइन में 38% नीचे गिरी मार्केट, लेकिन उसके बाद कितनी ऊपर गई. So if you had gotten scared and you sold during COVID, you missed on this entire ride. So I am not saying it's easy. ये आसान नहीं है कि यहाँ पे बेचो यहाँ पे खरीदो, जब ऊपर जाता है तो बेचो, नीचे आता है तो खरीदो. वो होता नहीं है. और बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है. सो आप अगर इन्वेस्टेड रहते तो you would not have to worry about this because you would take advantage of this full recovery, right? So we talked about this earlier. आपके जो दो बड़े भावना हैं, एक तो लालच होती है और दूसरा होती है डर, right? डर is the biggest mistake generator. तो ये स्लाइड पे जो दिखा रहे हैं हम कि आप इक्विटी फ्लोज जो आते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कब ज्यादा से ज्यादा आते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं जब मार्केट ऊपर गई है, राइट? सो यहां पे कम हो गए, लेकिन यहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स. और जब मार्केट्स नीचे है, जब ज्यादा से ज्यादा डर है, तब इन्वेस्टमेंट्स आते नहीं है लेकिन बाहर आते. So people are selling when the market is down and buying when the market is up, which is the exact opposite, no? आपको खरीदना है जब भाव नीचे है और बेचना है जब भाव ऊपर है, right? So you need to be thinking of this. Now, ये जो emotional factor है, it is the biggest challenge for any investor. आप professional investor हो, आप हॉबी कर रहे हो, whatever it is, आपकी जो इमोशनल फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में, that is the biggest challenge. और उसे आप अगर काबू में रखो तो then you will be one of the best investors, right? So if you think about the big global investors, Warren Buffett की बात करते हैं लोग. Warren Buffett is not impacted by emotion. One of his most famous sayings is, when people are greedy, जब लोगों को लालच है, I am most afraid, right? जब लोगों को बहुत लालच है तो मुझे सबसे डर होता है, और जब लोगों को सबसे डर है तभी मुझे सबसे लालच होती है. So what is he saying? कि when everybody is scared in the market, तब he makes his big investments. तो उनकी जो इमोशनल फैक्टर है वो एकदम जीरो है, right? They have full control over it. That's why he is one of the best investors, or regarded as one of the best investors, right? So this is an interesting slide. ये आपकी जो इमोशनल जर्नी होती है ना मार्केट में, तो when markets are going up, तेजी है, everybody is happy, right? Best investment decision, and we all think कि भाई हम बहुत smart है, right? Then it starts to come down, right? The first thing is चिंता होती है कि भाई क्या हो रहा है. Then if it continues to go down, then it transfers into डर. यार ये तो कभी रिकवर नहीं होने वाला है. I should maybe take my money out right now. 100 के 50 हो गए, लेकिन मुझे 50 तो बचाने दो, right? But then what happens is that it will go down a little more and it will become, let's say, 20.
for argument's sake, at that point you'll say, I am taking out everything, I'm never coming back to equity investment. But the best part of that is the market recovers. And आपने देखी है कि long term, it always recovers. So when you start to recover, if अगर आपकी investment नहीं हो, so how will you benefit from that? So this is just to show कि हमारी जो emotional journey है, उसको काबू में रखना होना है. अगर आप काबू में नहीं रखते, right? That is the challenge. So you can do one of two things. अगर आप खुद emotions को control कर सकते हो, तो perfect. अगर आप नहीं कर सकते हो, तो then there are simple methods. आप देखो SIP, step SIP, value SIP. These are simple methods you can use. जो आपकी जो emotion factor है वो निकाल दिए. Because then it is an automatic investment. The one thing you have to, एक चीज है कि आपको cancel नहीं करना चाहिए, right? वो SIP stop नहीं करनी चाहिए, right? That is the biggest factor. So I'll tell you कि let's see that recovery हम बात कर रहे थे, right? कि अगर आपने पूरे पैसे निकाल दिए जब मार्केट नीचे है, it takes you a lot longer to recover. So ये आप देखो जो चार्ट है लेफ्ट पे, अगर आपने you had stayed fully invested, right? निफ्टी 50 में आपने 25 साल से इन्वेस्टमेंट हाथ नहीं लगाया, right? तो आपकी रिटर्न होगी 12%, right? Approximately, right? So you had invested 1 lakh, that is now 16 lakh, right? अगर आपने उन 25 साल में बस 5 दिन, the 5 best days आप इन्वेस्टेड नहीं थे, मतलब मार्केट नीचे गिरी, आपने निकाल दिए पैसे, उसके बाद जो मार्केट जब बाउंस होती है, those are usually the best days. रिकवरी बहुत जल्दी होती है इनिशियली. तो अगर 25 साल में आपने बस 5 दिन you missed, आपकी रिटर्न 12% से 10% पे आ जाए एवरेज. अगर आपने 5 दिन नहीं, बस 25 साल में आपने 10 दिन मिस किए, the 10 best trading days, आपकी जो रिटर्न है 12% से 8% पे आ गई. So you get the drift. And in 25 years, right? 25 साल में, which is approximately 6000 दिन, उसमें से आपने अगर बस 40 दिन गवाए, मतलब you didn't participate in the 40 best days, आपकी रिटर्न देखो, it is not beating inflation. In fact, if you missed the 20 best days, right, over a 25-year period, you have not beaten inflation. 25 साल में अगर आपने बस 20 साल गवाए, मतलब आप इन्वेस्टेड नहीं थे, वो जो 20 साल 20 दिन जो थे बेस्ट डेज थे, आपका जो 5.7% रिटर्न है is not even covering inflation. So it is very important to start early but stay invested. Do not panic. इतना सारा हिस्ट्री है जो दिखाता है कि अगर नीचे जा रहा है तो वो ऊपर भी आएगा वापस. You have to stay invested. So what is that one solution? You stay invested and you enjoy it, right? Simple. But like I said, what do we look at? I mean, as human beings, हमारी जो emotional factor है, हम कैसे देखते हैं, we always look at best returns क्या है. So think of what you look at also. आप जब सोचते हो कि कहाँ पे डालना है, okay, best returns कौन सी फंड, आप वहां पे दें, और कौन से प्रोडक्ट और कौन से फंड्स में डालना चाहिए. But that is not the right way to do it. The way to think about your retirement plan है कि आपका गोल क्या है. गोल मतलब आपको कब रिटायर करना है, आपको कितने पैसे चाहिए जब आप रिटायर करोगे, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप. उसके बाद यू डिसाइड कि भाई ओके, दैट इज माय गोल. अभी एसेट एलोकेशन, रिमेंबर वो बैलेंस थाली, वो कहां पे, चावल में कितना डालना चाहिए, सब्जी कितनी लेनी चाहिए, राइट? यू नीड टू डिसाइड दैट. वंस यू डिसाइडेड दैट, देन यू डिसाइड, ठीक है, चावल इतना लेना चाहिए, लेकिन मुझे बासमती चाहिए कि दूसरा चाहिए, वो कौन सा चाहिए, राइट? That is where you decide your product. But the best thing you can do, who will help you right through this whole journey, right? This whole thing, setting up your goals, deciding, helping you with asset allocation, then deciding your product,
आपको एडवाइजर चाहिए. So for example, all your NJ advisors, this is their role. This is why they can help you. This is how they can help you, is to plan that out for you. कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, and how do you do it. So you must always talk to an advisor because it helps balance it out, right? So you see this, I don't know how many of you can recognize ये क्या है. North, south, east, west, एक compass है. लेकिन यहाँ पे मिसिंग है ना कुछ. What is missing? The dial, right? That points you towards north कहाँ पे है, south कहाँ पे है. तो अगर आपके पास एडवाइजर नहीं हो तो आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा, right? You will do it and some will be successful, but you increase आपकी जो probability है of success of achieving your retirement goal is enhanced when you talk to an advisor and use an advisor. So let's talk about the 5 key takeaways. Start early, right? When you're 25, you have little amount to invest, you invest it. Because every 5 years you wait, वो जो amount invest करने की जरूरत होती है वो double होती है, right? You diversify your assets, right? Because we talked about that thali, that we need a balanced approach. You have to invest regularly. SIP karo, because that means your emotional factor is taken away, right? And then you have to stay invested. Do not get scared के अंदर okay market ऊपर जा रही है तो अभी अंदर जाना चाहिए, market नीचे जा रही है तो पैसे निकालो. It does not work that way. You have to stay invested in it. In fact, उल्टा करना चाहिए आपको. Market ऊपर जा रही है तो कम पैसे डालो, market नीचे जा रही है तो और पैसे डालो, because that will then help you take advantage of the power of compounding. So we've got a bunch of our fund performances, but broadly speaking, my main message is in these things, right? So if I was to say, मतलब ये 5 जो takeaways है, अगर 5 ज़्यादा है, तो I'll give you just 3. Start early, invest regularly, and stay invested. Back to you, Ketan. Happy to take questions. Oh, sure. Thank you very much, sir, for such a wonderful session. और as you told, आपने जो 3 मंत्रा दिए हैं वो exactly शूट करते हैं एक इन्वेस्टर को कि जितना हो सके उतना जल्दी चालू करो, असेट क्लास सही चुनो. और असेट क्लास में भी आपने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए, स्पेशली रिलेटेड टू इक्विटीज, क्योंकि अंडर इन्वेस्टेड है लोग तो इक्विटीज में एलोकेशन बढ़ेगा तो नेचुरली उसका कंपाउंडेड बेनिफिट भी मिलने वाला है सबको, राइट. और सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. और आपका जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया 26 इयर्स इन अ सिंगल कंपनी, इट इज अ ह्यूज टाइम. एंड जितने भी डेटा आपने यहाँ पे शोकेस किए हैं वो डेटा आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किए होंगे. सो द ग्लोबल एक्सपोजर भी आपके पास है. तो सब डेटा जो आप यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे वो आप अपनी रियल लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए होंगे. तो इन्वेस्टर को भी यही मैसेज है कि ये इट इज नॉट जस्ट अ थियरी और इट इज जस्ट नॉट अ डेटा पॉइंट. ये एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो उससे. और जैसे कि आज हमारा टाइटल था सेविंग्स का बेहतर तरीका, तो आई एम श्योर आपको यहाँ से कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स. सर जैसे आपने बताया कुछ क्वेश्चंस है इन्वेस्टर्स के, तो वो क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करते हैं. तो 2-3 क्वेश्चन है वो पहले हम ले लेते हैं, एंड इफ टाइम परमिशन इफ यू अलाउ तो आगे फिर दूसरे क्वेश्चंस हम लेंगे. बट सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है, दो आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट बता दिए, एंड आई आल्सो अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट वो एक रिसेंसी बायस होती है. तो जो रिसेंट इवेंट्स होती है और जो रिसेंटली परफॉर्मेंस लोग देखते हैं उसको ज्यादा देखते हैं. तो एक इन्वेस्टर ने स्ट्रेट अवे सवाल पूछ लिया है, पर मैं उसको रिफ्रेम करके आपको पूछ रहा हूँ कि दो इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म, बट 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले SIP चालू की है या इन्वेस्टमेंट किया है तो द रिटर्न इज फ्लैट और इवन नॉट बीटिंग द FDs.
So what is your advice to those kind of investors? So what I will say is, आपको याद होगा कि one of the slides I showed you, right, कि हम क्या देखते हैं और क्या देखना चाहिए, right? As investors हम क्या देखते हैं, returns कितने हैं और product कौन सी है, और उसके पीछे भागते हैं. What we forget is हम returns के पीछे क्यों भाग रहे हैं? Why are we doing this, right? So ये आसान नहीं है, right? You have to think back to आपका goal क्या है, आपका मकसद क्या है. अगर आपका मकसद है रिटायरमेंट, अगर आपका मकसद है आपके बच्चे का एजुकेशन, वो 2 साल में नहीं हो रहा है, राइट? अगर आपने स्टार्ट किया होगा जब आपका बच्चा जब बॉर्न हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू सेंड हिम समवेयर टू डू स्टडीज, वो 10-12 साल 15 साल तो ही इज गोइंग टू बी हियर विद यू. तो आप 2 साल की क्यों फिक्र कर रहे हो, राइट? सो यू आर राइट, रीसेंसी बायस इज वेरी वेरी, बट you have to be able to think about go back to your goals. आपकी goal क्या है? What are you trying to achieve? Right? So it is, I mean, when you look at this, there is a huge emotional factor, right? When it's going down, 2 साल पैसे डाल दिए, if I put it in an FD, कम से कम 5-8% तो मिल जाते, right? I'm getting nothing here. But if you look at, I would say, any 5-year period, आप देखो, any 5-year period, right? I will say that equities have outperformed every asset class on that period. So when you're shrinking your investment horizon, you're not giving the opportunity for the investments to do what? मतलब, when we were talking about compounding, when we were talking about पैसे को काम करना चाहिए, you need to give that पैसा time to do the work for you. आप जितना वक्त ज्यादा दोगे वो उतना आपके लिए ज्यादा काम करेगा. So don't get sucked into ये short term thinking कि भाई 2 साल कुछ नहीं हुआ. आपका investment horizon 10, 12, 15, 20 साल है. So think of it in that. आसान नहीं है, but that's why you also need advisors जो आपका हाथ पकड़ के थाम सकते हैं. राइट सर, थैंक यू. तो वही कंक्लूजन यही है कि कंपाउंडिंग और गोल पे फोकस करना है. आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल इज लॉन्ग टर्म तो 1 साल या 2 साल का परफॉर्मेंस देखने का कोई भी सेंस नहीं है. नहीं, बिल्कुल सर. राइट सर. सो थैंक यू वेरी मच सर. सर, एक दूसरा क्वेश्चन जो हमेशा इन्वेस्टर को कंफ्यूज करता है कि इतने सारे कैटेगराइजेशन है म्यूचुअल फंड के अंदर. लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे कैप्स है. तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में कि भाई विच इज बेटर फॉर मी, लार्ज में जाऊं, मिड में जाऊं, स्मॉल में जाऊं, कहां पे जाऊं? So I can give you an easy answer, right? The easy answer is आप अपने एडवाइजर से बात करो, right? That is the easiest answer. But if you ask me, right, remember वो diversification की जो slide दिखाई थी कि you need a little bit of everything. How you decide in terms of which side should get larger, which side should get smaller, वो आपकी जो risk appetite होती है, right? And risk appetite मतलब we are talking same thing in terms of volatility, right? If you are young, small caps go up and down a lot. लेकिन small caps की जो long term investment potential and return power है is very large, right? So you would then want to be, if you're younger, you can be more small cap because you have a much larger. If you're slightly in the middle category, you want to have a little more mid cap. If you're in the larger, if you're slightly older, you want to be more large cap. Now, I would say you trying to decide large, mid, small, ये आसान नहीं है. किसी के लिए आसान, right? Even advisors के लिए आसान नहीं. Sometimes the best is to approach it with giving it flexible. Keep it flexible. जो portfolio manager है, so for example, one of the slides I showed you earlier in terms of performance, वो हमारी जो एक fund है, Franklin Flexi Cap, that goes all across. They decide कि अगर ये साल हमें लगता है कि small cap की valuation नीचे है and potential ज़्यादा है, तो they will add more into small. So I would say that a lot of times, this understanding the diversification, going into it, you give it to the experts. Let them figure that out.
Why do you want to try and take that on yourself? But if you want to do it on your own, then you think about large cap being stable, small cap being the teji juice. And how do you balance that out? मतलब आप हमारी जो थाली होती है, right? Achar is a little bit. Why? Because otherwise it will burn you up. Similarly, if you have only small cap, which is what I would put as achar, it will burn you up, right? So you need to balance that. True, right. Once again, thank you, sir. तो वो भी अपने जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन में आसान एग्जांपल लिए, सवाल क्वेश्चन आंसर में भी आप आसान एग्जांपल के साथ समझा रहे हो, आचार के साथ स्मॉल कैप को कंपेयर कर दिया है, तो आई एम श्योर के समझना आसान हो गया कि क्या करना है. So moving towards the next question, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोर और लेस वो सेकंड क्वेश्चन के रिलेटेड है. यहाँ पे कैप सिलेक्शन की बात थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके भी हमेशा फंड सिलेक्शन या स्कीम सिलेक्शन, कितनी स्कीम रखनी, वो भी एक हमेशा डाउट रहता है. बहुत सारे, आप जैसे कि फ्रैंकलिन ही ले लो, आपको फ्रैंकलिन के पास भी बहुत सारी स्कीम है. ऐसे ही फ्लेक्सी कैप है, तो फ्लेक्सी कैप सिर्फ फ्रैंकलिन के पास नहीं है, बहुत सारे फंड हाउस के पास है. तो नंबर ऑफ स्कीम्स, मतलब आज एक इन्वेस्टर 10-15 हजार 25 हजार की एसआईपी कर रहा है, या 10 लाख 15 लाख 25 लाख लमसम इन्वेस्ट कर रहा है, तो नॉर्मली ये स्कीम्स कितने रखने चाहिए? So schemes कितने रख ले, that is the, I would say, not so much the wrong question, but it is a question that says there is no right answer, right? I can't tell you कि भाई 5 डालो, 10 डालो, 15 डालो, 20 डालो, right? Because I have seen portfolios जहां पे बस 5 फंड है and their returns have been incredible. And I've also seen the same kind of returns जहां पे 20 फंड है, right? So the number of funds is not as important. Now I will also go back to one of my original answers is you need to talk to an advisor कि कौन से फंड में जाना चाहिए, right? Now I mean, since you're talking to me, since I work with Franklin, I will always say कि भाई you should look at Franklin funds. But you want an independent advisor. I can also tell you कि हर वक्त हमारा फंड टॉप नहीं होगा, right? और हर वक्त हमारा फंड बॉटम में भी नहीं होगा, right? Similarly, no fund will be best performing or worst performing. So what you want to find is, and this is where जो आपका एडवाइजर होता है वो extremely important होता है, because they can help you say कि भाई आपका जो प्लान है, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, they can be achieved by this fund manager because he manages it like this in this category. It can be managed by this fund manager. So that mix, right, is best coming from your advisor, right? So I would suggest that you talk to your NJ advisor and make sure कि भाई कहाँ पे डालना चाहिए, right? But also understand क्यों डालना चाहिए, इसमें क्यों डालना चाहिए, right? Then they will explain that to you. Right. So where is not that much important, why is more important? Absolutely, absolutely. Right. So एक कॉमन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से ले लेता हूँ, जो कि कॉमन है, और आपने भी ग्लोबल एक्सपोजर की आपके पास है, यूएस में भी आपने पोर्टफोलियो मैनेज किया है. और अगेन पहले सवाल में मैंने जो रिसेंसी बायस की बात की थी कि रिसेंट इवेंट्स जो ग्लोबली हो रही है, चाहे वो बैंक क्लैप्स की बात हो या वॉर की बात हो, तो ये जो ग्लोबल इवेंट्स या ग्लोबल सिचुएशन है, उसके बारे में सर थोड़ा आप गाइड कीजिए इन्वेस्टर को, ताकि उससे इंडियन मार्केट की क्या इम्पैक्ट हो सकती है और उसमें हमारा बिहेवियर या हम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं. So let's see, in the last, ये पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बहुत नॉइज हो रही है, राइट? वो सिलिकॉन वैली बैंक, यूएस में ट्रेजरीज में बहुत, गवर्नमेंट बॉन्ड में बहुत ऊपर नीचे हो गया, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब डर है अभी, राइट, कि क्या होने वाला है. नाउ आई ऑलवेज गो बैक, राइट, टू थिंकिंग के आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है. इफ योर गोल इज टू रिटायर इन 20-30 years, ये 2 हफ्ते में ऊपर नीचे जो हो रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, right? Now, what does it mean? Can it have an impact? Of course, it can have an impact, right? अगर US recession में पड़ गई तो पूरे ग्लोब में प्रॉब्लम होने वाली है, and India is not different, right? India has one advantage कि हमारी जो internal growth potential है वो that is much larger than any other country. But we also depend, right? हमारी जो exports हैं, that's a big part of our economy still. अगर वो बंद हो गई because the other economies are in recession, it will have an impact, right? So I don't think we worry so much. So the way I look at it is, yes, there will be an impact. Now, when I look at this, let's take the Silicon Valley Bank issue in particular, right? ये जो बैंक की जो issue है US में, it is very, very focused on that particular bank. ऐसे नहीं है. So a lot of the biggest issues, what was our last big market crisis before COVID? 2008 global financial crisis थी, right? वहां पे जो problem हुई थी, there was this risk. The risk that really got played out was contagion risk. Contagion risk मतलब, I mean, now I'll give you a simple example. आपको अगर conjunctivitis होती है, right? What do we first do? नजदीक मत आना. क्यों? Because your germs will come to my eyes, I will also get it. That is contagion, right? Your problem becomes my problem because we came close to each other. In a financial market, अगर एक बंदा गिर गया, now if I'm leaning against him, or if I'm close to him, and if he falls on me, then I will also fall. That is what happened in 2008. ये जो Silicon Valley की जो issue है, that is very specific to them. ऐसे नहीं है कि there are not more banks that have the same issue. है, लेकिन Silicon Valley बंद होने से वो किसी और पे नहीं गिरी. So that contagion risk is lower. But जो panic होती है वो panic होती है, because a lot of times people worry like we don't know what happened. So the way I look at it is, yes, you need to understand it, but if you start taking actions, right, based on that, that is where you have the bigger risk. अगर आप डर जाते हो and you take your money out, when this issue becomes less of an issue, you are not going to be able to quickly put that money back in. So you will miss out on that. So in my mind, it is, I always say, okay, bhai, whatever the problem is, war ho, inflation ho, recession ho, jo kuch bhi ho, like let's take recession for example. Data that we have analyzed over the last 30-40 years is average recession, right? Now I'm giving you US data because that's the most long period that we have. Recessions are 18 to 24 months max. Months. मतलब 1.5 या 2 साल. Your bull market, your expansions in the economy are 5 to 8 years. So you're looking at 5 या 8 साल की जो expansion opportunity है, आप 2 साल के recession में डर जाते हैं. So don't do that. So you have to move out of that. So let's come back to your question in terms of what is the likelihood of what happens now. Global में क्या करना चाहिए? It's the same logic, right? अगर आपकी global investments में SIP है, तो you continue with that. Because now you're getting an opportunity to buy it cheaper, right? आप rupee cost averaging आप नीचे कर रहे हो, अपना average cost है आप नीचे ला रहे हो, right? Because you're buying more units for the same rupee amount. So that is something you need to continue. I don't think that you want to. Is it possible that this year may be a recession in the US? It's possible, absolutely. Should that change your long-term goal? Absolutely not. Simple as that. So, I mean, I know you said that I was giving simple examples and all. I quite honestly believe कि आप जितना simple रखोगे, that increases your possibility and chances of staying true to your plan, right? Right. So thank you very much, sir. And जो भी common questions थे वो हमने cover कर लिए.
मोर ऑफ ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एनजे पार्टनर्स या हमारी ब्रांचेस कवर कर लेंगे, सो आई एम नॉट टेकिंग दोज क्वेश्चंस. एंड वंस अगेन थैंक यू टू यू एंड योर एंटायर टीम फॉर टेकिंग अ टाइम फॉर अस. एंड आज हमारे ये सैटरडे स्कूल में एक अच्छे यूनिक आइडियाज के साथ, यूनिट एग्जाम्पल के साथ आपने जो सेशन लिया, राइट. एंड थैंक यू टू द क्लाइंट्स एज वेल जो आज जुड़े हुए हैं. कीप लिसनिंग टू आवर सेशंस, वहाँ से आपको हर बार कुछ नया नया मिलता रहेगा. और जैसे कि सर ने बार बार एक बात रिपीट की है, कनेक्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपका पर्सनल फाइनेंस जो है या आपके जो पर्सनल इमोशंस है वो आपका जो एडवाइजर है, आपका जो एनजे पार्टनर है वो ज़्यादा बारीकी से जानता है, नज़दीक से जानता है. आई थिंक आपको उससे कांटेक्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए. बट सर के सेशन से जो पता चला है वो ये है कि भाई आपको टाइम देना है, डिले नहीं करना है इन्वेस्टमेंट. इक्विटी और म्यूचुअल फंड का जो बास्केट है उसको एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा आज भी इंडिया के अंदर रियल एस्टेट, गोल्ड या फिजिकल असेट्स में या अदर फाइनेंशियल असेट्स में पड़ा हुआ है. तो उसको हम अगर इक्विटीज में थ्रू म्यूचुअल फंड अगर इंक्रीज कर पाए तो हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो इजीली हम अचीव कर पाएंगे, राइट. सो थैंक यू सर. और सिद्धार्थ जी, सिंस यू आर देयर, तो if you want to conclude the session with your note, so over to you. No, I am good. And केतन जी, आपने बहुत अच्छे से उसको समराइज किया. एंड जैसे अभी ने कहा, मैं बिलीव करता हूँ एंड आई एम श्योर दैट, हालांकि हमारे साथ इतने सारे इन्वेस्टर्स आज जुड़े हुए हैं इस कॉल में, हर क्राइसिस के बाद एक अपॉर्चुनिटी आता है, हर अपॉर्चुनिटी के बाद एक क्राइसिस आता है. तो जैसे जीएफसी के बाद मार्केट बढ़ा, कोविड आया, और अगर इसका भी डेमोग्राफिक नंबर्स हैं दैट 3 साल या 5 साल के अंतर्गत अगर आप नंबर्स को देखते हो, इट हैज कम बैक इन अ वेरी स्ट्रांग वे. सो वी विल लीव इट एट दैट. एंड जैसे मैंने कहा, एनजे फॉर अस इज नया जोश, एंड आई एम श्योर दैट यू आर एडिंग वैल्यू एवरी सैटरडे टू योर इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Take care. Thank you, sir. Thank you very much, and thank you to the Thank you. audience. This concludes our today's call, and you all can log off.